Good morning, students. Welcome to our math class. As you know, we are discussing our unit number 8 coordinator. Let's recall which things we already discussed in our previous class. We revise the previous class topics. So, in previous class, we discussed about the definitions of quadrilaterals, correct? Then how can we create a quadrilaters? Then after we discuss types of quadrilaters, correct? Then after we discuss the properties of quadrilaters and such a diagrams of the quadrilaters. Okay, so now we are going to start today the our next topics. The next topics is consider all the theorems of this chapter. Okay, so students, I hope ki you write and learn the properties and the types of quadrilaters at home in your holidays, correct? So now we are going to start our theorems that is related to quadrilaters. Okay, now theorem number 8.1. Now what is the statement of theorem number 8.2? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Now what do you mean by congruent? So in our chapter number 6, lines and angles, we know what is the definitions of line and angles. Then after in chapter number 7, we learned about the triangles, and in the chapter of this triangle we discuss about this word congruent. Now congruent means what? We discuss about two triangles and each parts of triangle and correlated between टू ट्राइंगल्स, करेक्ट? तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है? सिंपल कि हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे और दो ट्राइंगल के सारे पार्ट्स यानी उसकी लाइन वी कैन से उसकी साइड्स, उसके एंगल्स क्या रहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग सारे सेम रहेंगे. दैट इज नोन एज अ कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट? सो थियरम नंबर 8.1 सेज दैट कि वी नीड टू प्रूव. तो यहाँ पे आपको थियरम नंबर 8.1 का प्रूफ आपको याद रखना है. उसके अलावा जितने भी थियरम्स है यू डोंट नीड टू रिमेंबर द प्रूफ, करेक्ट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी प्रूव द थियरम नंबर 8.1. तो प्लीज स्टूडेंट्स अगेन रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. द स्टेटमेंट इज टेल अस दैट कि बी अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम. So suppose we have to assume one parallelogram. So here I am assume in your see the figure. Here I am assume the parallelogram ABCD. Yes or no? Correct? And the diagonals, that is I assume that it is diagonal is AC. Now I have to prove. Which things I need to prove? कि देखो यहाँ पे students, there are two triangles are created. First triangle is this, that is called ABC. There is a first triangle. And another triangle is ADC. तो both two triangles are known as congruent. मुझे ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? congruent है, ऐसा प्रूव करना है, करेक्ट? तो लेट्स प्रूव इट. तो सी स्टूडेंट्स, हियर if I am taking a triangle like this ABC, correct? in triangle ABC, okay, so उसके लिए क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर in parallelogram opposite side are parallel to each other. So this is the parallel sides, and see our diagonal is AC. तो स्टूडेंट्स आपको याद आया ऐसी थियोरी हमने देखी थी लाइंस एंड एंगल्स के अंदर कि देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड वन इज अ ट्रांसवर्सल. तो देखिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? देखो Z क्रिएट हो रहा है, Z. यस और नो? सो वी कैन से this is our two alternative angles, and alternative angles are always same. Yes or no? Correct? Same thing here. AD parallel to BC
because ABCD is parallelogram, and again this AC create transversal. So again क्या बन रहा है आपका Z. See here, this is our Z. Yes or no? Yes, correct. These two angles are same. Correct. तो देखो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, ये एंगल एंड ये एंगल सेम है, ये एंगल एंड ये एंगल सेम है, और दोनों के बीच में देखो ये साइड कैसी है आपकी, ये AC इज कॉमन. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एंगल साइड एंगल रूल. ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यस और नो? तो दिस इज द वे टू रिमेंबर द थियोरी ऑफ प्रूफ. करेक्ट. नाउ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसको मैंने क्या किया है, करेक्ट वे में राइटअप किया है. करेक्ट. तो सी हियर केयरफुली कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशन दैट इन ABC triangle and CDA triangle BC parallel to AD and AC is transversal. So what happened, the angle of BCA and DAC, correct, are alternative angles as I show earlier explained. Same again, AB and DC are parallel and AC again transversal. So two triangles BAC and DCA, ठीक है, जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेटिव एंगल्स. तो बोथ आर सेम and AC is equal to CA because this is the common side. So what we get the ASL rule, a triangle ABC congruent triangle CDA. hence proof, जो हमने प्रूफ करना था. ठीक है, hence proof. करेक्ट. वेरी इजी थियरम. करेक्ट. इसमें प्रूफ में कुछ बड़ी बात नहीं है. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ टू प्रूव दिस theorem. Okay, there is only one theorem that you have to remember with the proof. Correct. Now move on the next theorem. The next theorem is theorem number 8.2, and the statement of theorem number 8.2 is in a parallelogram opposite sides are equal. Suppose I draw parallelogram like A, B, C and D. Correct students. तो क्या होगा, मेरी ऑपोजिट साइड्स मुझे लेनी है. तो क्या होगा, AB का ऑपोजिट क्या होगा, CD. बोथ आर इन सेम मेजरमेंट, मतलब आर इक्वल, एंड AD एंड BC आर बोथ आर ऑपोजिट्स. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल. करेक्ट. तो हाउ कैन वी से दैट कि भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ आइसाइड्स आर इक्वल, बाय यूजिंग थियरम नंबर 8.2. करेक्ट. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थियरम, दैट इज थियरम नंबर 8.3. क्या है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ 8.2. मतलब क्या है, थियरम नंबर 8.2 का उल्टा. क्या, क्यों उल्टा है, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल. करेक्ट. अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक ABCD. करेक्ट. एंड उसमें क्या हो रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लाइक AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. तो व्हाट कैन आई से, तो आई कैन से दैट कि भाई दिस क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. करेक्ट. तो दिस थियरम इज इट हेल्प अस टू प्रूव दैट एनी क्वाड्रिलेटर एज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटर है एंड आई नीड टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो दिस थियरम इज हेल्प अस टू प्रूव दैट थिंग. करेक्ट. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थियरम. Next theorem is say that कि भाई in a parallelogram opposite angles are equal. Suppose I draw the parallelogram like this ABCD. Now which thing is mentioned, that opposite angles. So suppose I taking angle A, then opposite angle is angle C. Correct. And suppose I want to asking that opposite angle of B, so angle D. Correct. Then these opposite angles are always equal because it is a part of parallelogram. Correct. तो in a parallelogram opposite angles are equal. Now I hope कि भी आपको understand हो रहा है. Correct. Good. चलिए next. Theorem number 8.5. तो if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. Again this theorem is help us to prove that any quadrilateral is parallelogram or not. Correct.
Same, it is also converse of theorem number 8.4. Correct? Next, theorem number 8.6. The diagonals of a parallelogram bisects each other. Now I already explained what you mean by bisector. Bisector का मीनिंग क्या है कि भाई मेरे पास अगर पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, करेक्ट, एंड द डायगोनल्स, तो आई ऑलरेडी taught you that कि भाई हाउ कैन वी get the diagonals of any quadrilaters. तो what I said that joining of opposite points we can get diagonals of quadrilaters. Correct? So here our diagonals is AC and BD and it is intersect at a point O. Correct? This is the theorem number 8.6. Now theorem number 8.7. Again it is a converse of theorem number 8.6. मतलब उसका उल्टा कि भाई if the diagonals of the quadrilater bisect each other then it is known as a parallelogram. तो again this theorem is help us to prove that कि भाई any quadrilater, how can we say that it is a parallelogram or not. तो by using this theorem we say that कि भाई this quadrilater is parallelogram. Okay, good. So these are the theorems. Now move on the next theorem, that is theorem number 8.8, and it is said that कि भाई a quadrilater is a parallelogram if pairs of opposite side is equal and parallel. Correct? Now again क्या आया, इन प्रीवियस थियोरम्स हमने क्या देखा था कि अगर ऑपोजिट एंगल्स आर सेम तो भी वो क्या होगा क्वाड्रिलेटर, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो भी क्या होगा पैरेललोग्राम. एंड अगेन इन दिस थियोरम से कि भाई बोथ एक ही साथ सेम हो रहा है, मतलब मेरे क्वाड्रिलेटर्स में क्या हो रहा है, सपोज आई एम टेकिंग दिस क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ठीक है, तो उसमें मेरे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी. सेम I have same thing with the numerical that AC is equal to angle C and angle B is equal to angle D. तो ये सब चीज़ें एक साथ होगी. At that time also I say that this quadrilater is my parallelogram. Correct? This is the theorem number 8.8. Correct? So these are the theorems, correct, which is help us to know the properties as well as how can we prove the quadrilater as a parallelogram or not. ठीक है, ये भी हमें बताता है. Now next and most important theory which is help us to solve the MCQs related to this chapters. correct? ये आपको help करेगा उसके अंदर mid point theorem. ठीक है, based on the mid point theorem so many questions are can we make and asking in the exams. correct? Now understand this theorem. First of all, let's read the statement of this theorem. The statement says like that, like this कि भाई the line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to third sides. Now understood the statement first. correct? So क्या लिखा है, the line segment joining the midpoints of two sides. So suppose I am taking this triangle ABC and taking a midpoint E and F. Now I am joining these 2 points E and F, तो I get the line segment EF. तो क्या कह रहा है theorem, it is parallel to third side of the triangle. तो third side कौन सी हो जाएगी, ये BC, तो it means EF parallel to क्या हो जाएगा आपका BC. This is your midpoint theorem, and from this midpoint theorem we also say that कि भाई the measurement of EF is half of the BC. Now what do you mean by this half of BC? So suppose in the question that given is that BC is equal to 6. Now what is the measurement of EF? Then half of this, it means 2 this is 6, that means EF is equal to 3. correct? तो BC is equal to क्या होगा 6. ठीक है, उसका उल्टा भी हो सकता है क्या कि if the question में बोला है कि भाई EF is equal to 4. Now what is the measurement of BC? So what we have to do, put the value of EF in this equation. So therefore 4 is equal to 1/2 multiply BC. Now we want to find BC, then 2 is the change the side. So what we get, BC is equal to 2 multiply 4,
इज इक्वल टू 8, तो आंसर विल बी 8। तो आप ऑप्शन में देखोगे कि भाई कहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है, यू टिक मार्क दैट MCQ, करेक्ट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जाम related to this theorem number 8.9, that is midpoint theorem. Now next and the last theorem of this chapter, that is theorem number 8.10. The line draw through the midpoint of the one side of a triangle parallel to other side bisect the third side, correct। जैसे क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये देखिए पैरेलल है, इससे मैं पैरेलल कर रहा हूँ एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज योर थ्योरम नंबर 8.10। नाउ लेट्स टेक अ एग्जाम्पल that is remaining, that is called exercise 8.1 question number 1, that is only one numerical is asking from this chapter and the sums based on this midpoint theorem, correct। so let's discuss our last example of this chapter, that is exercise 8.1 question number 1। open the textbook and find the question number 8.1 question number 1। now read the question carefully। exercise number 8.1 question number 1, what is the data is given in the question number 1, read the question carefully। so in the question the angles of quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13। find the all angles of the quadrilateral, so we need to find all measurements of angles। so we know in quadrilateral sum of all angles is equal to 360 degree, correct। so first let we assume that let angles are 8.1 question number 1, start with the solution answer। let angles be, now we remove the sign of ratio and put the sign x, like 3x 5x 9x and 13x। now next we write कि by using angle sum property, correct, angle sum property, 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree, correct, yes or no। therefore क्या होगा, add the 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree। now add 3 plus 5 8, 8 plus 9 कितना होगा 17, 17 plus 13 कितना आएगा 17 plus 13, add quick 30, correct। therefore 30x is equal to 360 degree, therefore x is equal to 360 divided by 30 implies x is equal to क्या होगा 12, yes or no, 0 0 cut, 12 3s are 36। now put the value of x in these all angles, therefore 3 multiply 12 it is 36, then 5 multiply 12 is equal to 60, then 9 multiply 12 108, and last 13 multiply
12. It means what? 13 multiplied 12 कितना होगा? 13 multiplied 12, it is 156 angles. Correct? So now क्या लिखेंगे? लास्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द रिक्वायर एंगल्स आर angles are 36 degree, 60 degree, 108 degree, 156 degree. Answer. So you can solve the question like this in your exam if the question is asking like this. Okay, so here our chapter number 8 is completed. So in your homework you have to remember all the theorems and write the theorems in your notebook. Okay, thank you.